गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट मु सोनाली स्वागत करुँची मो चैनल बायोलॉजी सोनाली रे। तो गतकाली क्लास रे आमे देखिथिले इकोसिस्टम रो आमे कॉन्सेप्ट विषय जानी तार स्ट्रक्चर विषय पढ़ी। ठीक अच्छे तो आज क्लास रे आमे तार बेसिकली तार फंक्शन विषय आमे पढ़ा। तो देख गत क्लास आम ए बायोटिक कौन से प्रोड्यूसर कंज्यूमर तापर कंज्यूमर केते प्रकार डिकम्पोजर ये समस्त विषय ऑलरेडी पढ़ी सारीचे। तो जो मैंने आज मो क्लास रे नुआ अच्छ से मो प्रीवियस क्लास को देखी पार एवं मो चैनल को सब्सक्राइब करि पार। ठीक अच्छे तो आज देखा फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम जमती मु गतकाली कही जे पांचटा बेसिकली पांचटा फंक्शन उपर आम पढ़ा। तो फास्ट हूँ देख प्रोडक्टिविटी, सेकेंड है डिकम्पोजिशन, थर्ड है फिजिकल जोटा एनर्जी फ्लो, तापर देख बायोलॉजिकल जो फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल सक्सेशन अच्छी, तापर देख बायो जियो केमिकल न्यूट्रिएंट साइकिल प्रोसेस। तो यहाँ हूँ तार बेसिकली तार फंक्शन। तो आज देख फास्ट आम देखा प्रोडक्टिविटी कौन। तो देख a constant input of solar energy is the basic requirement for any ecosystem to function and sustain. Primary production is defined as the amount of biomass or organic matter produced per unit area over a time period by plant during photosynthesis. तो बेसिकली प्राइमरी प्रोडक्शन कहले तुम माने कौन बुझिलो? प्राइमरी प्रोडक्शन होची जेतिक भी बायोमास होची बा ऑर्गेनिक मैटर अच्छी। ठीक अच्छे तार जो अमाउंटा सेटा होची पर यूनिट एरिया। ठीक अच्छे गोटे यूनिट एरिया रे केते बायोमास बा ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस होची। ठीक अच्छे केते बड़े ओवर ए टाइम पीरियड बाय प्लांट है गोटे निर्दिष्ट समय है गोटे मनकर यहाँ हूँ गोटे यूनिट एरिया ये गोटे यूनिट एरिया रे गोटे निर्दिष्ट समय रे केते ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करुच्ची। ठीक अच्छे गोटे गछ केतबेले जिते फोटोसिंथेसिस करिथाए। ठीक अच्छे से जिनसा कहुए प्राइमरी प्रोडक्शन। बेसिकली यहाँ तुम बुझीपार प्राइमरी प्रोडक्शन माने कौन है। तापर देख इट इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ वेट जोड़ा को आम ताको को हिसाब रे करूँ तुम जान लो वेट और एनर्जी है। तो वेट हिसाब रे हो बा एनर्जी हिसाब रे ताको आम एक्सप्रेस करूँ। ठीक अच्छे द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। तो तार तुम जानीगल प्रोडक्टिविटी अर्थ कौन जी बायोमास को से माने प्रोडक्शन करें से रेट ऑफ बायोमास जो बायोमास प्रोडक्शन को प्रोडक्टिविटी बोली कहुए। ठीक अच्छे तो देख इट इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ तुम देख जी हो जो ग्राम हो बा यार्ड हो है और किलो कैलोरी यही प्रकार सब एक्सप्रेस करा जाए टू कंपेयर टू द प्रोडक्टिविटी of different ecosystem है। it is can be divided into gross primary productivity है सॉरी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो GPP कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो NPP है। तो ये फुल फॉर्म गुड़ाक भी मन रखता दुई प्रकार प्रोडक्टिविटी अच्छी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी गोटे हूँ ग्रॉस प्रोडक्टिविटी आ गोटे हूँ नेट प्रोडक्टिविटी। ठीक अच्छे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कौन ऑफ ए इकोसिस्टम इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस समय रे केते मात्रा रे बायोमास प्रोडक्शन है ताको ग्रॉस प्रोडक्टिविटी बोली कहा जाए है। ए कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ GPP इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट इज रेस्पिरेशन। सेथुर कौन करे गोटे किछिटा अमाउंट रो जो ग्रॉस प्रोडक्टिविटी रो से कौन करे तार रेस्पिरेशन रे यूज करे। ठीक अच्छे तापर देख ग्रॉस प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन बा लॉस जितकी है इज द नेट प्रोडक्टिविटी जोटा NPP। तो देख बेसिकली कौन बुझीपार ग्रॉस प्रोडक्टिविटी माने कौन जिते बेलू सॉरी ग्रॉस प्रोडक्टिविटी माने कौन है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माने कौन जिते बेलू प्लांट कौन करे जेतिकी मात्रा रे बायोमास प्रोडक्शन को से तार कौन करे छाड़ी थाए ताको कहे ग्रॉस प्रोडक्टिविटी। आउ NPP बा नेट प्रोडक्टिविटी माने कौन सेथिरु तापर सेथिरु कौन हुए NPP माने कौन नेट प्रोडक्टिविटी। तो देख यही GPP रु
कौन करे से किछिटा मात्रा रेस्पिरेशन रे यूटिलाइज करिथाय ठीक अछि तो बाकी जहाँ बंचिला ताको एनपीपी बोली कहा जाए ताले हम एठी ताको शॉर्ट फॉर्म रे केमति लिखि पारबा जीपीपी माइनस आर दैट इक्वल टू एनपीपी ठीक अच्छे तो एक तुम मन रखी है तो ग्रॉस प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन दैट इक्वल टू नेट प्रोडक्टिविटी एटा बुझीगल तापर देखो नेट प्रोडक्टिविटी इज अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजम्पशन ऑफ हेटेरोट्रॉप्स एबे जो नेट प्रोडक्टिविटी बंचिला एबे एको किए कंज्यूम करबो जेतकी तार रेस्पिरेशन ने प्लांट यूटिलाइज करबा कथा से करिदेला बाकी जो बड़का रहा नेट प्रोडक्टिविटी ताकू वर्तमान कंज्यूमर कौन करबो कंज्यूमर ग्रहण करिवो ठीक अछि तो कंज्यूमर फास्ट प्राइमरी कंज्यूमर किए जोड़ा होचे हमर हेटेरोट्रॉप्स रे होची हर्बिवर्स ठीक अछि एवं एठी हमें टोटल नहीं जा हेटेरोट्रॉप्स से हर्बिवर भी नेबा डिकम्पोजर भी नेबा है तब देखो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर वर्तमान कंज्यूमर मान को द्वारा जो ऑर्गेनिक मैटरटा जो मिली थाए ताकू कह जाए सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कौन माने तुम जो कंज्यूमर कौन करिवो एई एनपीपी को से खाइबो बा नेट प्रोडक्टिविटी जेतकी रहला सेठू से तार खाद्य रूपे ग्रहण कला करि साला परे से जो तापर से कौन कला जेतकी से ऑर्गेनिक मैटर को फॉर्मेशन कला ताको सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोली कहा गला ठीक अछि तापर देखो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड ऑन द प्लांट स्पीशीज इनहेबिटेटिंग ए पर्टिकुलर एरिया it also depend on a variety of environmental factor available of nutrient and photosynthetic capacity of plant तो बेसिकली केते मात्रा रे खाद्य बा न्यूट्रिशन सब्सटेंस को उत्पादन हैला गोटे गछ केमिति करिवो केमिति सेटा जणा पड़िबो पर्टिकुलर एरिया रे से को प्रकार एनवायरमेंटल तार फैक्टर अछि सेटा फेवरेबल कि अनफेवरेबल तापर देखो तार जो न्यूट्रिएंट केमिति से अवेलेबल अछि फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी केते अछि प्लांट रो ए समस्त ऊपर से निर्भर करे ठीक अछि तापर देखो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड ऑन द प्लांट स्पीशीज इनहेबिट सॉरी एटा तो कहिथली मु नै कि हां तापर देखबा देयरफॉर इट वेरीज इन different type of ecosystem ठीक अछि the annual net primary productivity of the whole biosphere is approximately देखो टोटल जदि गोटे वर्ष रे टोटल बायोस्फीयर केते प्रोडक्टिविटी जदि हमें हिसाब करबा ताले 170 बिलियन टन ठीक अछि हिसाब रे हमको मिलिबो ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑफ दिस डिपॉजिट ऑक्युपाइंग अबाउट 70% of the surface. The productivity of the ocean are only 55 billion ton. Rest of course is on land. तो basically ये जो 170 रु 55 बिलियन होची हमरो कौन समुद्र रे देखा जाए प्रोडक्टिविटी बाकी तक 170 जोटा होची सेटा हमर लैंड रे देखा जाए ठीक अछि तब देखो डिकम्पोजिशन देखो डिकम्पोजिशन कौन you may have heard about the earthworm being refers to as the farmer's friend तो बेसिकली कृषकर बंधु बोली कि आमे गोटे जिया को कहि थाउ तार कारण कहीं ना जिया कौन करे माटी को उर्वर करिवारे सहायता करे एटा तुम छोट श्रेणी रु जानि सारिछ ठीक अछि दिस इज सो बिकॉज दे हेल्प इन द ब्रेकडाउन और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर एज वेल एज लूजिंग ऑफ द सॉइल तो बेसिकली माने मूर्तिबा को कौन करती उर्वर करती एवं आउ कौन जेतिकी भी ऑर्गेनिक मैटर अच्छी ताको से माने सिंपल मॉलिक्यूल ले परिणत करती ठीक अच्छे डिकम्पोजर ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड वाटर न्यूट्रिएंट एंड द प्रोसेस इज नोन एज डिकम्पोजिशन तो बेसिकली इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को कौन करे डिकम्पोजर माने कौन करती सिंपल सब्सटेंस रे परिणत करती एवं आउ मध्य कौन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड हो किंबा पानी हो वाटर हो बा न्यूट्रिएंट परिणत करती तो ये होल प्रोसेस को डिकम्पोजिशन बोली कहा जाए तब देखो डेड प्लांट रिमेन सच एज लीफ बार्क फ्लावर एंड डेड रिमेन ऑफ द animals include facial matter
constituent detritus এই ସବୁ ଯାହା ବି ଅଛି ଏଟା ମଧ୍ୟ ରହିଲା ହେଲା। ତ which is the raw material of the decomposition। ତ এইଗୁଡ଼ା ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ଯେତେ ଡିକମ୍ପୋଜିସନର raw material। the important step in the process of decomposition are। ତ ଏଥିରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେପ୍ ଆସିପାରେ ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟେସନ୍, লিচিং, କାଟାବୋଲିଜିମ୍, ହ୍ୟୁମିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ମିନେରାଲାଇଜେସନ୍। ତ এইଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍। ତ ଏଗୁଡ଼ା ଆମର ଏତେ ଜାଣିବାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି। তারপর দেখো ডেট্রিভর্স বা আমি আর্থম বিষয়টি জানিবা ব্রেকডাউন ডেট্রিটস ইন্টু স্মলর পার্টিকল দিস প্রোসেস ইজ কল্ড ফ্রাগমেন্টেসন। তো বেসিকালি এটা হচ্ছে ফ্রাগমেন্টেসন। তারপরে দেখো এটা তুমি নোট বনাই দেলে বি তুমি নিজে জানিଯିବ ফ্রাগমেন্টেসনর অর্থ কোণ। তারপরে বাই দ্য প্রোসেস অফ লিচিং ওয়াটার সল্যুবল ইনঅর্গানিক নিউট্রিয়েন্ট গো ডাউন ইন্টু দ্য সয়েল horizon and get precipitated as unavailable salt। তো এটা হলো লিচিং। তারপর দেখো ব্যাকটেরিয়া অ্যান্ড ফঙ্গাল এনজাইমস ডিগ্রেড ডেট্রিটাস into simple inorganic substances। This process is called catabolism। Hala, it is important to note that all the above steps in decomposition operate simultaneously on the detritus। তারপর দেখো হিউমিফিকেশন কোন হিউমিফিকেশন and mineralization occurs during decomposition in the soil। Humidification leads to accumulation of the dark color amorphous substances called humus that is highly resistant to microbial action and undergoes decomposition at an extremely slow rate। Being colloidal in nature, it serves as a reservoir of nutrient। ହେଲା ତାପରେ humus କ'ଣ it further degraded by some microbes and release of inorganic nutrient occurs by as a process known as mineralization। तो बेसिकली जो प्रोसेस रे मिनरल मिली था से प्रोसेस को हमें मिनरलाइजेशन कहि थाउ। तो एटा आउ जो ह्यूमस रे जोटा हम ह्यूमिफिकेशन कहि थाउ ह्यूमस जो मिलता है ह्यूमस ही था से प्रोसेस को हमें ह्यूमिफिकेशन कहि थाउ ठीक अछि। तो देखो decomposition is largely on oxygen requiring process। The rate of decomposition is controlled by chemical composition of detritus and climatic factor। In a particular climatic condition, decomposition rate is slower if detritus is rich in lignin and chitin and quicker। তারপর দেখো if detritus is rich in nitrogen and water soluble substances like sugar। Temperature and soil moisture are the most important climatic factor that regulate decomposition through their effect on the activity of soil microbes। Warm and moist environment favor decomposition, whereas low temperature and anaerobic inhibit decomposition, resulting in build up of organic materials। তো দেখো এগুড়াক এতে তোমার জানিবার ନାହିଁ ঠিক ଅଛି। খালি তুমি যদি ফর্দর হায়ার স্টডি ପାଇଁ যদি তোমাকে দরকার তাহলে তুমি এটা রেফরেন্স তুমি ନେଇପାର ঠিক ଅଛି ଲେଖିପାର। ତ ନୋଟ୍ ଅଧିକ ନୋଟ୍ ବନେଇଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କି ତମେ ଅଧିକ ଏଥିରୁ ନଲେଜ୍ ଜାଣିପାରିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏନର୍ଜି ଫ୍ଲୋ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଠିକ୍ ଅଛି। ଏନର୍ଜି ଫ୍ଲୋଟା ତୁମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାରଣ ତୁମ ସିଲାବସ୍ରେ ବି ଏନର୍ଜି ଫ୍ଲୋ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଜାଣିବାର ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଦ କେମିକାଲ ଏନର୍ଜି ଅଫ୍ ଫୁଡ୍ ଇଜ୍ ମେନ୍ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ एनर्जी ठीक अच्छे। तो जी केमिकल एनर्जी अच्छी फुड्र से मेन सोर्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। दिस एनर्जी इज ट्रांसमिटेड टू डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल एलोंग द फूड चेन। तो बेसिकली जो एनर्जी अच्छी से एनर्जीटा कौन करे गोटे पर आ गोटे ऑर्गेनिज्म आ गोटे पर आ गोटे ऑर्गेनिज्म को कौन करे स्टेप बाय स्टेप से कौन करता है फ्लो करें केमी फ्लो करें फूड चेन द्वारा से फ्लो करें। तो ये फूड चेन कौन यहाँ आम पढ़ा जान ऑलरेडी आगु तुम फूड चेन कौन से विषय जानी सारी कि आम पढ़ा ठीक अच्छे। दिस एनर्जी फ्लो इज बेस्ड ऑन टू डिफरेंट
लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बेसिकली जो एनर्जी फ्लो अच्छी दुईटा थर्मोडायनामिक लॉ उपर डिपेंड करुच्ची तो फास्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कौन मन दियो ये है कहीं यहाँ तुम इम्पोर्टाट अच्छी दैट स्टेट दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय एटा तुम तुम समस्त जानिछ गोटे एनर्जी को आम केतबेले भी क्रिएट करि परिबानी बा ताको आम डिस्ट्रॉय करि परिबानी इट कैन बी ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म जमती कि आम जानले सोलार एनर्जी रु केमिकल एनर्जी तैयारी हैला आम कौन सोलार एनर्जी को ब्रेक करि पारलु ना आम केमिकल एनर्जी को आम पुणी थरे कौन करि माने तैयारी करि पारलु नाइ सेटा केवल एनर्जी जो होचे सेटा सोलार एनर्जी रो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट हैला ठीक अछि ताले एटा केवल गोटे मीडियम रो आ गोटे मीडियम को केवल कौन हो पारे ट्रांसफर हो पारे हैला एटा होचे हमर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक ठीक अछि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक कौन कहूची that state that as energy transfer more and more of it is wasted जेते की एनर्जी टा वेस्ट हम जी एनर्जीटा ट्रांसफर हम गोटे जगार गोटे गोटे जगार गोटे से से वेस्ट ही चलो ठीक अच्छे तार कारण कौन से कह जोटा तुम 10% लॉ भी जानी है 10% नियम जोटा तुम से जानी ठीक अच्छे द एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर दैट सपोर्ट द सर्वाइवल ऑफ सच a great number of organisms. For almost all organisms on earth, the primary source of energy is solar energy. तो बेसिकली आम समस्ते जानीचे जे प्राइमरी सोर्स कौन गोटे गोटे जो जगह आम एनर्जी पाइबा से एनर्जी रो प्राइमरी सोर्स कौन से आमर सोलार एनर्जी ठीक अच्छे सोलार सनलाइट को यूटिलाइज करके आम खाद्य प्रस्तुत करें इट इज amusing to find that we receive less than 50% of the sun effective radiation on earth तो बेसिकली आम तार जो रेडिएशन होची तार केवल आम 50% भी कम मात्रा रे कौन कहते आम ग्रहण करि थाउ when we say effective radiation we mean the radiation which can be used by plant to carry out photosynthesis तो इफेक्टिव जब तुमको कहे इफेक्टिव रेडिएशन माने कौन इफेक्टिव रेडिएशन माने हैला जो गछ जो फोटोसिंथेसिस रे जेतकी तार सोलार एनर्जी दरकार करे ताको हमें इफेक्टिव रेडिएशन बोली कहि परिबा तो तार माने 50% रो भी लेस आमे कौन करि पारू पाऊ ठीक अछि most of the sun's radiation are fall on the earth is usually reflected back into space by the earth atmosphere this effective radiation is termed as the photosynthetically active radiation तो यहाँ बेसिकली ये मन रखी फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन माने कौन जेतिकी मात्रा रे सनलाइट पड़े से 50% भी कम मात्रा रे कौन हुए फोटोसिंथेसिस रे प्लांट कौन करे ग्रहण करे ताको कहा जाए कौन इफेक्टिव रेडिएशन तो बेसिकली यही जिनस को यही टर्म को कहा जाए फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन बोली कहा जाए देखो ओवरऑल वी रिसीव अबाउट 40 to 50% of the energy having photosynthetically active radiation and only around 2 to देखो बेसिकली केते होची सेथरु देखो 2 to 10% of it is used by plant तो बेसिकली सेथरु कोन हेते 10% को प्लांट यूज करि थाए फॉर फोटोसिंथेसिस thus this percent of PAR support the entire world as plant are the producer in the ecosystem तो बेसिकली ये जो 10% अच्छी केवल 10% उपरे ही टोटाल आमर पृथ्वीर लिविंग ऑर्गेनिज्म माने डिपेंड करती कहीं तुम कौन जान लो जे प्लांट होची आमर प्रोड्यूसर प्लांट होची तुम सूर्यर जो आलोक अच्छी ताकू नहीं यूटिलाइज करकिना खाद्य प्रस्तुत कले कि आम पाइबा तो जदि प्लांट ही तार प्रोडक्ट केवल 10% यूज कला ताले भाव से आम केते पाइबा ठीक अच्छे and all the other organisms are either directly or indirectly dependent on them for their survival कहीं ना आम जानी आम डायरेक्टली हो बा इनडायरेक्टली हो प्लांट उपर निर्भर करूँ
द एनर्जी फ्लो टेक्स प्लेस भाया फूड चेन एंड फूड वेव। तो बेसिकली दीटा ये रही है फूड चेन हो बा फूड वेव हो ए दीटा प्रोसेस रे एनर्जी कौन होता है फ्लो होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम प्लांट बीइंग द प्रोड्यूसर absorb sunlight with the help of chloroplast and part of the transform part of it is transferred into chemical energy and in the process of photosynthesis। तो এটা तुमको बुझेबा किछि नै, এটা photosynthesis रो डेफिनेशन से कहिछि, ठीक अछि। This energy is stored in various organic product in the plant and pass onto the primary consumer in the food chain when the herbivores consume प्राइमेरी कंज्यूमर है जो हर्बिभर जो है प्राइमेरी कंज्यूमर से जो प्लांट को खाद्य रूपे ग्रहण करे से एनर्जी रो से किसी मात्रा पाए द प्लांट आज फूड एंड convert chemical energy accumulate in plant product like kinetic energy है ना degradation of energy will occur through its conversion into heat। तब देखो then followed by the secondary consumer when these herbivores are consumed by carnivore of the first order जोड़ा होचे हमर सेकेंडरी कंज्यूमर है फर्दर डिग्रेडेशन will occurs finally when tertiary consumer consume the carnivores again energy will be degraded। अर्थात जेतेटा हमें देखो এটা କ'ଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ପୁରା ବୁଝେଇଦେବି ହେଲା ତୁମ ଡାଇଗ୍ରାମରେ ପୁରା ବୁଝେଇଦେବି ହେଲା ଦସ୍ ଦ ଏନର୍ଜି ଫ୍ଲୋ ଇଜ୍ ୟୁନି ଡାଇରେକ୍ସନାଲ୍ ଇନ୍ ନେଚର୍। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥାଅ ଏନର୍ଜି ଫ୍ଲୋଟା ସବୁବେଳେ ୟୁନି ଡାଇରେକ୍ସନାଲ୍ ଥାଏ ଏଇଟା ତୁମର ସର୍ଟ ନୋଟ୍ରେ ବି ପଡ଼ିପାରେ କେବେ ମଲ୍ଟି ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ହେଇପାରିବନି ଏନର୍ଜି ଫ୍ଲୋ ସବୁବେଳେ ୟୁନି ଡାଇରେକ୍ସନାଲ୍ ହେଇଥାଏ ଠିକ୍ ଅଛି। ବେସ୍ ଅନ୍ ଦ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଦେୟାର ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଅର୍ ଫୁଡ୍ organism occupy a special place in the food chain that is known as the trophic level। तो बेसिकली जो ऑर्गेनिज्म माने फूड चेन रे गोटे गोटे स्थान अधिकार करिसंती ताको ट्रॉपिक लेवल बोली कहा जाए। प्रोड्यूसर बिलोंग्स टू द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हार्बिवोर जो होची टू द सेकेंड एंड कार्निवोर होची टू द थर्ड। केमिति हमें ये डायग्राम टाको देखले तुम जानिबो। एबे जहाँ मु तुमको जेतिक भी पढ़ेली ताको ए टोटाल गोटे डायग्राम रे ही डिस्क्राइब कराइछि। कोन देखो फास्ट होची देखो हमें कोन जानले प्राइमरी प्रोड्यूसर किए अच्छी फास्ट ट्रॉपिक लेवल प्लांट अच्छी आम ये ग्रास ट्री कि प्लांक्टन नहीं पारिबा। तो ये जेते कि मन कर एनर्जी से रखी ठीक अच्छे मन कर ये जेते तार एनर्जी रखी तो यार कौन हम या टे लेस हम कौन प्राइमरी कंज्यूमर जोटा हूँ सेकेंडरी टॉपिक लेवल अच्छी जू प्लांक्टन ग्रास हपर बा काओ एमाने ताठू टिके लेस एनर्जी ग्रहण करेंगे ठीक है डिग्रेड हो अर्थात नष्ट हो किसी मात्रा एनर्जी पुणी थर जो सेकेंडरी कंज्यूमर आसो जोटा कार्निवोर होची थर्ड ट्रॉपिक लेवल बार्ड फिश उल्फ एमाने कौन या आउ टिके कम मात्रा एनर्जी ग्रहण करेंगे एवं लास्ट को जी अच्छी मैन हो बा लायन हो एमाने आउ टिके एनर्जी कम ग्रहण करेंगे। तो यहाँ कौन एनर्जी गोटे पर गोटे स्टेप कौन हो डिग्रेड हो कमी कमी जीव ठीक अच्छे। तो यहाँ है तार तुम जान लो देखो द इम्पोर्टेंट पॉइंट टू नोट इज दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीज आज सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। तो गोटे पर स्टेप रे एनर्जी सेतिकी डिक्रीज ही जीवो व्हेन एनी ऑर्गेनिज्म डाइज इट इज कन्वर्ट टू डेट्रिटस और डेड बायोमास दैट सर्व एज ए एनर्जी सोर्स ऑफ फॉर डिकम्पोजर। ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिक लेवल depend on these at the lower tropic level for their energy demand. Each tropic level has a certain mass of living material at a particular time called as a standing crop। The standing तो एबे standing crop कौन the standing crop is measured as a mass of living organism or number or the number in a unit area। The biomass of the species is expressed in terms of fresh or dry weight। तो बेसिकली स्टैंडिंग क्रॉप माने कौन गोटे हूँ मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोमास अच्छी जी ताकू आम कह स्टैंडिंग क्रॉप है। मोर ओवर इन द फूड चेन द एनर्जी फ्लो
10% ऑफ लॉ। तो बेसिकली जहाँ भी पढ़ो 10% ऑफ लॉ को से फॉलो करे, ठीक अच्छे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ओनली 10% ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द अदर, रेस्ट इज लॉस्ट इनटू द एटमॉस्फेयर। तो बेसिकली आम ये प्रीवियस रे बुझ मन कर जदि ये जगह 10% से ग्रहण कला, ठीक अच्छे, तो 10% 10% केते हम 1%। तो यही जगह से 1% ग्रहण कला, पुणी थर ये केते करब 1% 10% केते 0.1%, एवं यार फिर पुणी थरे 10% केते 0.01%। तो बेसिकली टर्शियरी कंज्यूमर पाक पहुँचला बेल को 0.01% से केवल कौन करे ग्रहण करें, ताको 10% लॉ बोली कहा जाए। बर्तमान आम देखा फूड चेन कौन, ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम द प्रोड्यूसर थ्रू ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। तापर देखो कार्निवोर टू सॉरी हर्बिवोर टू कार्निवोर टू डिकम्पोजर इज रिपीटेड ईटिंग एंड बीन ईटेन इज नोन एज फूड चेन। तो बेसिकली जो फूड एनर्जी अच्छी से ट्रांसफर होता है काटू प्रोड्यूसर रु आसीज ऑर्गेनिज्म मान पाखे केमिति प्रथम हार्बिवोर, हार्बिवोर कार्निवोर, कार्निवोर डिकम्पोजर एवं रिपीट होता है अर्थात से निजे भी खाए बा अन्य द्वारा खिया भी जाए, से जहाँ भी हो ये समस्त प्रक्रिया को फूड चेन बोली कहा जाए। इन नेचर बेसिकली टू टाइप ऑफ फूड चेन इज रेकग्नाइज, गोटे हूँ ग्राजिंग फूड चेन आउ हूँ डेट्रिटस फूड चेन। तो बेसिकली यहीटा तुम सिलेबस रे अच्छी, ठीक अच्छे, यहाँ भी तुम सिलेबस तुम जान फूड चेन अच्छे ग्राजिंग फूड चेन और डेट्रिटस फूड चेन तुम अच्छी, किंतु 10% ऑफ एनर्जी फ्लो वाला नियम टाक भी तुम मन रखार अच्छे, नोट कर, ठीक अच्छे। ताहले ये पढ़ा फूड चेन एंड एनर्जी फ्लो आर फंक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ इकोसिस्टम व्हिच मेक देम डायनामिक। द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम आर लिंक थ्रू देम। तो बेसिकली गोटे बायोटिक हो बा गोटे एबायोटिक कंपोनेंट हो ये फूड चेन माध्यम एक अन्य सहित लिंक होगी रही था, ठीक अच्छे। तार देख ग्राजिंग फूड चेन कौन आम देखा ना रू ही बुझा ग्राजिंग फूड चेन माने कौन जोटा हूँ आम गोटे जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम आम बुझीपर, ठीक अच्छे। द which start from the green plant that make food for herbivores and herbivores is turned into the carnivores। तो बेसिकली गोटे प्लांट बा ग्रीन प्लांट थाए सेठू कौन थाए फूड टाक हर्बिवोर्स पाक ट्रांसफर हुए, सेठू कौन हर्बिवोर्स रु कार्निवोर पाक ट्रांसफर होता है। इकोसिस्टम विथ सच टाइप ऑफ फूड चेन आर डायरेक्टली डिपेंड ऑन द इनफ्लक्स ऑफ सोलर रेडिएशन। This type of energy thus depend on autotrophic energy capture and the movement of this capture energy to herbivores. Most of the ecosystem in nature follow this type of food chain। तो देखो सिंपल ग्राजिंग फूड चेन को आम जो हिसाब करवा केमिति एटा को देख लक्ष्य कर, प्रथम आसला फाइटोप्लांक्टन, तापर जू प्लांक्टन, तापर फिश सिक्वेन्स। तो यहाँ को आम जानीगले गोटे प्रकार है। आउ गोटे हूँ आम ग्रास जाने ग्रास को खाइला रेबिट, रेबिट रु फक्स एवं से प्रकार सिक्वेन्स ये जीव ग्राजिंग फूड चेन। तो तुम दुईटा एग्जांपल जानीगल ग्राजिंग फूड चेन एबे आम देखा कौन डेट्रिटस फूड चेन कौन आम देखा। तो बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक मैटर टू द डेट्रिवर्स ऑर्गेनिज्म व्हिच इन टर्न मेक फूड फॉर प्रोटोजोआन टू कार्निवोर्स है। तो बेसिकली डेट्रिटस फूड चेन माने कौन जोटा हूँ तुम देख डेड ऑर्गेनिक मैटर रू स्टार्ट होता है, ठीक अच्छे। तो डेट्रिटस फूड चेन बीइंग विथ डेड ऑर्गेनिक मैटर इट इज मेड अप ऑफ डिकम्पोजर व्हिच आर हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म है। तो बेसिकली डिकम्पोजर ही यहाँ करी थाए कौन जो डिकम्पोजर ऑर्गेनिक मैटर अच्छे डेड ऑर्गेनिज्म अच्छी ताको डिकम्पोजर केमती करे जोटा डिकम्पोजर माने ही करी थांती, ठीक अच्छे। मेनली से अच्छे फंजाई किंबा बैक्टेरिया होइथिबो। दे मीट देयर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट बाय डिग्रेडिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर और डेट्रिटस।
These are also known as saprotrophs. ସାପ୍ରୋ ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁଟା ଡିକମ୍ପୋଜ ଯିଏ କରିଥାଏ ଠିକ୍ ଅଛି ଡିକମ୍ପୋଜର ସିକ୍ରେଟ୍ digestive energy enzyme that break down dead and waste material into simple inorganic material which are sequentially absorbed by them. तो बेसिकली ये कौन करता है डिकम्पोजर कौन करे तार डाइजेस्टिव एंजाइम गोटे सिक्रेशन करें से डाइजेस्टिव एंजाइम कौन करे ये जो डेड बा वेस्ट मटेरियल मान को कौन करता है सिंपल फॉर्म रे ट्रांसफर करता है ता मॉलिक्यूल को से ब्रेक करता है एवं इनऑर्गेनिक मटेरियल ले परिणत करता है ठीक अच्छे ये तुम जानीगल इन एक्वाटिक इकोसिस्टम ये जो अच्छे आम DFC है सॉरी GFC है जोटा आम ग्राजिंग फूड चेन रो जानलु आम इज द मेजर conduit for energy flow as against this in a terrestrial ecosystem as much larger fraction of energy flow through the detritus food chain. तो बेसिकली या द्वारा detritus food chain द्वारा आमर अधिक मात्रा आम कौन एनर्जी को फ्लो कर पारू ठीक अच्छे देन थ्रू द GFC detritus food chain may be connected with the grazing food chain at some level. Some of the organisms of the DFC are prey to the GFC animals, and in the natural ecosystem some animals like cockroach, crow, etc. are omnivores. से ସେମାନେ omnivores ମଧ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି तब देख parasitic food chain कौन parasitic food chain is also a auxiliary food chain. It begin with the host and usually end in parasite अर्थात ये कौन है गोटे होस्ट देहरे रहे एवं सेठू खाद्यपाई तार उपरे निर्भर करता है आम समस्ते जानीचु से प्रकार जो फूड चेन को आम parasitic food chain बोली कहबा तो बेसिकली एटा थिला टोटल डेट्रिटस आउ ग्राजिंग फूड चेन विषय आम पढ़िले तार आगु आम जहाँ जहाँ तार फैक्टर अच्छी तार फंक्शन अच्छी तार विषय में आम पढ़िले तो आज पाई तो नेक्स्ट ईयर आम अधिक पढ़ा आज पाई तो थैंक यू।